ધોરણ 4 હિન્દી વિડીયો નંબર 8.1. હવે આપણે 7 પાઠ સુધી જોયું હતું. હવે 8મો પાઠ આવ્યા ચતુરચૂહા. ચતુરચૂહા, ચૂહો એટલે ઉંદર. હવે ઉંદર શું કરે છે આપણે આમાં ચિત્રમાં જોવાનું. ચિત્રમાં દેખાય છે ને તમને, દરજીની મશીન ઉપર જઈને બેસી ગયો છે. હવે ઉંદર શું વાત કરે છે દરજી જોડે એ આપણે સમજવાનું છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. एक चूहा था. ये क्या था? चूहा. वह रास्ते पर जा रहा था. चूहा रास्ते पर जा रहा था. उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला. चूहा रास्ते पर जा रहा था. उसे कपड़े का एक बहुत अच्छा टुकड़ा मिला मलमल का. वह उसे लेकर आगे बढ़ा. वो टुकड़े को लेकर आगे बढ़ा. उसने एक दर्जी की दुकान देखी. दर्जी के पास जाकर उसने कहा, वहींથી नाटक जेवं चालू थाय. चूहा बोला, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे. दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की क्या सी दे? टोपी सी दे. दर्जी ने कहा, यह कौन बोल रहा है? यह कौन बोल रहा है? चूहा बोला, मैं चूहा. चूहा बोल रहा हूँ. मैं कौन हूँ? चूहा हूँ. मैं चूहा बोल रहा हूँ. इसकी एक टोपी सी दे. इसकी एक अच्छी सी टोपी मुझे सी दे. दर्जी बोला, चल रास्ता नाप. चल यहाँ से रास्ता नाप. रास्ता नाप એટલે શું આવે? ચાલ અહીંથી તારો રસ્તો પકડ. રસ્તો પકડ. અહીં આવીશ નહીં, નહીં ફટકાવીશ એમ કહે છે. બરાબર ને? चूहा बोला, अरे तू मुझे डरा रहा है? तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा. चूहा क्या बोलता है? देखो बहुत अच्छा बोलता है, हमें भी अच्छा लगेगा. कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. चूहा क्या बोलता है दर्जी को? तो मुझे रास्ता नापने को कहता है. मुझे रास्ता नापने को कहता है. એટલે પછી એ શું કહે છે ખબર? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. कचहरी એટલે શું લા? કચહરી એટલે કચેરી. કચહરી એટલે કચેરીમાં આપણે જેમ જઈએ ને પોલીસ સ્ટેશન, એવી રીતે પોલીસની કચેરીમાં જઈશ. સિપાહીને બોલાવીશ એટલે પોલીસને બોલાવીશ અને તને ખૂબ ફટકારાઈશ અને હું બધું જોઈશ તને જે ફટકારશે નહીં. यह सुनकर दर्जी डर गया. दर्जी डर गया. उसने झटपट टोपी सी दी. दर्जी ने झटपट टोपी सी दी. હવે તમે જુઓ, પાછો ટોપી લઈને આગળ જાય. ટોપી દરજી તો બીવી ગયો કે આ તો મને લઈ જશે પોલીસ સ્ટેશન અને પછી બરાબરનો માર ખવડાશે. એના કરતાં કે મને ટોપી સીવી આપવા દે ફટાફટ. એટલે બિચારા દરજીએ ટોપી સીવી આપી. હવે એમની એમ તો ટોપી પાછળ ઉંદર પહેરે એવો નહોતો. એટલે ટોપી પહેન કર ચૂહા આગે બઢા. ટોપી તો લઈ લીધી અને ટોપી પહેરી લીધી માથે અને પછી પાછો ઉંદર આગળ વધ્યો. રાસ્તે મેં કસીદે કાર કી દુકાન દેખી. કસીદે કાર એટલે શું? ભરત ગૂંથણનો પેલો સંચો નહીં આવતો એવી રીતે અંદર એમ્બ્રોડરીને એવું ભરત થાય ને એવી એણે દુકાન देखी. रास्ते में कसीदेदार की दुकान देखी. चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई. टोपी तो क्या अच्छी नहीं लगती, थोड़ा कसीदा कढ़ा दो, थोड़ा कसीदा कढ़ा दो એટલે થોડું ભરત ગૂંથણ ઉપર કરાવી દો ને તો ટોપી મસ્ત લાગે. કે ચૂહા પાછા ક્યાં ગયા? કસીદેકારની દુકાનમાં ગયા. ભાઈ મેરી ટોપી પર થોડા કસીદા કાઢ દે. મારી ટોપી ઉપર થોડું ભરત ગૂંથણ એમ કે કરી દે. कसीदार ने चूहे की ओर देखा. फिर उसने धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? चल चल इधर, यहाँ किसे फुर्सत है? चूहे को तो बराबर धमकाया. चूहा कहे, अच्छा तो तू मुझे भी भगा रहा है, लेकिन सुन,
कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटाऊंगा और तमाशा देखूंगा. પાછો ફરી એને તો દાદાગીરી ચાલુ કરી રે ભાઈ, ઉંદર ભાઈએ તો કરી દીધી ને, બરાબર ને. પાછો આને પણ કહેવા માંડ્યો, મને તારે નથી કરી આલવું કે, હા બળતાર કે કચहरी में जाऊंगा, પોલીસ સ્ટેશન જઈશ, સિપાही को बुलवाऊंगा, ત્યાંથી પોલીસને બોલાવીશ, તુझे ખૂબ પીટવાऊंगा, ડંડે ડંડે બરાબરનો મેથી પાક ખવડાવીશ કે, और तमाशा देखूंगा और मैं देखता रहूंगा. ચિત્રમાં દેખાય છે ને ઉંદર બેઠો છે અને પેલો સરસ મજાનું ભરત ગૂંથણ કરી આપે છે. ઉંદર કેવો હોય છે, જબરો હોય છે મારે બેટો, સાચી વાત ને, કોઈ એને ના પાડી શકે જ નહીં. यह सुनकर कसीदेदार घबराया, कसीदेकार भी घबराया और उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका कि भाई तू कचहरी ना जाइस, मैं तेरे को कढ़ा देता हूँ कसीदा. उसने टोपी लेकर उस पर अच्छा कसीदा काट दिया, बहुत अच्छा कसीदा काट दिया. चूहा तो खुश हो गया, चूहा खुश हो गया. આપણે જોયો ને પાઠ, ખૂબ મજા આવી પાઠમાં, આવી ને. ચૂહાએ કેવી દાદાગીરી કરી અને સરસ મજાની ટોપી પણ સીવડાવી અને સરસ મજાનો ભરત ગૂંથણ પણ એમાં કરાયું. પાઠ બધાને મજા આવી ગઈ ને. कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पीटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. આ બધું બહુ મજા આવી ગઈ આપણને. હવે નાપ એટલે માપ શબ્દાર્થ છે. ઝટપટ એટલે જલ્દી જલ્દી. કસીદા એટલે કઢાઈ અથવા ભરતકામ. ફુરસાદ એટલે નવરાશના સમય. કચહરી એટલે અદાલત. પછી સિપાહી એટલે સૈનિક. કેચી એટલે કાતર. કસીદેકાર, બરાબર ને, કસીદેકાર એટલે શું, જે ભરત ગૂંથણ કરતો હોય ને એ માણસ. હવે આપણે સવાલ જવાબ જોઈશું આગળ. હવે આપણે ચતુર ચૂહાના થોડા ઘણા વિકલ્પો જોઈશું. હવે આગળ આપણે જોઈએ, ચૂહે કો દરજી ને ક્યાં सीख दी, चूहे ने दर्जी को क्या सीख दी, क्या सी दिया, तो कमीज पतलून के टोपी, तो क. क्या सी दिया, क. टोपी सी दी. क्या सी दिया, टोपी. હવે બીજું, कचहरी की धमकी से पहले कौन डर गया, कचहरी की धमकी से पहले कौन डर गया. कसीदेकार दर्जी के व्यापारी, तो दर्जी, पहले दर्जी के पास गया था ना, तो दर्जी डर गया. હવે ત્રીજો આવ્યો, હવે 3 નંબર, टोपी पहनकर चूहा किसके पास गया, कसीदेकार के पास, व्यापारी के पास के चूहिया के पास. तो શું આવશે, અ. कसीदेकार के पास गया, कसीदा कढ़ाने के लिए. चौथું, कसीदेकार ने टोपी पर क्या काट दिया, दाना, डोरी के कसीदा, तो कसीदा काट दिया. 5મું, टोपी पहनकर चूहा कैसा बना, खुश, नाराज, अ और ब दोनों, तो खुश. टोपी पहनकर चूहा कैसा, खुश खुश हो गया, खुश खुश हो गया. હવે એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન આવશે. પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે, બરાબર. હવે પહેલો પ્રશ્ન, चूहे को रास्ते में से क्या मिला, चूहे को रास्ते में से क्या मिला. जवाब, चूहे को रास्ते में से कपड़े का एक टुकड़ा मिला. रास्ते से क्या मिला, कपड़े का एक टुकड़ा मिला. बीजो, दर्जी की दुकान पर जाकर चूहे ने क्या कहा, दर्जी की दुकान पर जाकर चूहे ने क्या कहा. दर्जी की दुकान पर जाकर चूहे ने कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की क्या सी दे, टोपी सी दे. હવે 3 નંબર, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जा रहा था, तो चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास जा रहा था. 4 नंबर,
कसीदेकार क्या करता है? तो कसीदेकार कसीदे काढ़ने का कार्य करता है. कसीदेकार कसीदे એટલે ભરત ગૂંથણનું કામ કરે છે. ચૂહા કબ ખુશ હુઆ? चूहा कब खुश हुआ? कसीदेकार ने टोपी पर एक अच्छा कसीदा काट दिया तो चूहा खुश हो गया. कसीदेकार ने एक टोपी पर एक अच्छा कसीदा काट दिया ने तो चूहा खुश खुश हो ગયા. હવે આગળ જોઈશું આપણે છઠ્ઠો સવાલ. चूहे ने कसीदेकार और दर्जी से कैसे डराया? तो चूहे ने कचहरी में जाने की धमकी देकर कसीदेकार और दर्जी को डराया. कैसा बोलता था चूहा मालूम है ना? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटाऊंगा और तमाशा देखूंगा. ऐसा बोलकर बहुत धमकाया और कसीदा निकाला. હવે પ્રશ્ન ત્રીજો આવ્યો. પ્રશ્ન ત્રીજો છે મોટા સવાલ જવાબ, પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ. હવે પહેલો છે दर्जी क्यों डर गया? दर्जी क्यों डर गया? तो चूहे ने कहा कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. यही धमकी सुनकर दर्जी डर गया. जवाब मोटो છે પણ આપણને આ મોઢે રહી જાય એવો છે. बराबर ना? चूहे ने क्या कहा? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. चूहे की इस धमकी से दर्जी डर गया. હવે પછી બીજો સવાલ આવશે. अगर दर्जी और कसीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? जो नहीं डरते तो चूहा क्या करता? दर्जी और कसीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा थाने में जाता, फिर रिपोर्ट दर्ज करवाता और उन पर मुकदमा भी ठोक देता. शायद चूहा बदले की भावना से दर्जी और कसीदेकार के कपड़े भी उतर लेता. કેવી સરસ વાત કરવામાં આવી. જો આપણે દરજીએ જો ટોપી ના સીવી આપી હોત ને તો એમ કે શું કરત ઉંદર? તો ઉંદર શું કરત કે જઈ અને પોલીસ સ્ટેશને રિપોર્ટ લખાવત અને પછી અદાલતમાં એનો મુકદ્દમો દાખલ કરત અને પછી ચૂહા શું કરત? ઉંદર દરજીની દુકાનમાં ઘૂસી જાત અને બધા કપડાં કોતરી ખાત. બરાબર ને? આ બધું ઉંદર કરી શકે ને? હવે ત્રીજો સવાલ એના પછીનો. चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से कपड़े की टोपी सिलने के लिए कहा. दर्जी ने मना करने पर चूहे ने उसे कचहरी में जाकर सिपाही को बुलवाकर पिटवाने की धमकी दी. दर्जी से कपड़े की टोपी सिलवाने के लिए कहा. दर्जी ने मना करने पर चूहे ने उसे कचहरी में जाकर सिपाही को बुलवाकर पिटवाने की भी धमकी दे दी. સરસ મજાના એ સવાલ જવાબ છે. એ આપણો પૂરો થાય છે વિડીયો. બરાબર? હવે એના પછીનો વિડીયો જોઈશું. ત્યાં સુધી આ સવાલ જવાબ તમારે નોટમાં લખી કાઢવાના છે. આવજો બાળકો.